Hello viewers, and welcome to this second episode of Departmental Enquiry. In the last episode, we have seen the preliminary inquiry and a charge sheet. Now in this episode, we are going to see the procedural part of an inquiry. Now let's see who conducts an inquiry. As regards the holding of the inquiry, it is to be borne in mind that the prerogative of holding an inquiry always is with the employer. It is the employer who is to hold the inquiry. At no point of time the employee holds the inquiry, because the inquiry is being conducted by the disciplinary authority or the management. So the employer holds it. Yes, the employer might delegate this power to some subordinate officer, but essentially it is to be held by the employer himself. As regards some crude essentials of the inquiry, it is not to be forgotten that the inquiry should subscribe to some essentials. What are they? First is, there must be a charge sheet of which the concerned workman is informed with. Then the inquiry must be conducted in the presence of the workman. Thereafter, the workman should also be given an opportunity to cross-examine the witnesses of the management. And lastly, we see that he must also be given an opportunity to put up a defense. And ultimately, when the inquiry is over, there must be an inquiry report with reasonings, that is the findings of the inquiry officer. Only findings are not necessary. The findings should essentially be supported with the reasons, and then only we can say that some essentials of the inquiry are prevalent and present in the inquiry proceedings. After the service of the charge sheet, what is to be done? After the service of the charge sheet, the workman is to tender his reply, whether he admits the charge sheet or he does not admit the charge sheet. If he does admit the charge sheet, by purview of some recent decisions of many of the high courts, even if he admits the charge sheet, yet the factum of the inquiry should be present. That is, all the procedural formalities of the inquiry must be conducted. There is a difference of view. Some say this is not necessary, but I think it's in the fitness of things that we do hold all the procedural formalities of the concerned inquiry. Nextly, it is also possible that the concerned workman might not accept any of the charges in the charge sheet, for which he will tender his reply. Once he tenders his reply, the management or the disciplinary authority has to see whether the reply is satisfactory or it is not. If the reply is satisfactory, well then the management is satisfied, and then they might drop all the charges because they are satisfied with the explanation. But if they are not satisfied with the explanation, then they might proceed to hold a regular inquiry. Now let's understand, can we proceed with an inquiry at this stage, or some other things are required to be followed? Yes, some other prerequisites are very essential before we proceed with the actual conduction of the inquiry. First and foremost, you have to ensure that you have served an appointment letter to the inquiry officer. Otherwise, the workman might tomorrow say, what makes the inquiry officer feel that he is an inquiry officer? Has the disciplinary authority or the management appointed him? Nextly, we have to ensure that the workman has understood the date of the inquiry, the time of the inquiry, the venue of the inquiry, whether the venue is suitable to him, have we paid him the travelling allowance to the venue. All these things have to be considered. Now these things have to be served by way of a notice, which should also contain that the workman will be allowed an opportunity to cross-examine the concerned management witness. He will be allowed to put up a defense. He will also be paid a subsistence allowance, or all these things to be put up in detail right in the first instance. Else, tomorrow the workman might say that he was not paid his subsistence allowance, and this might vitiate the inquiry. At last but not the least, one thing is to be borne in mind, that the notice has to be a reasonable one. Say a notice of 15 days is a reasonable notice,
But a notice of 15 minutes or a notice giving a time of 1 year is an unreasonable notice. Now, all the prerequisites are over. Now let's see how are we to conduct an inquiry. After the prerequisites, we ensure one thing, that the principles of natural justice, that is audi alteram partem, that is the right to be heard, and another principle, that is nemo debet esse judex in propria causa, that is nobody can be a judge in his own cause, are followed to the maximum extent. We have already seen that we are hearing the concerned workman or the employee. The inquiry is being conducted by an impartial inquiry officer. Now this satisfies the natural justice part of it amongst the many elements which yet we are to see. Now we begin with the inquiry of the concerned person. This inquiry begins first of all, the employer begins it. The inquiry officer reads out the charge sheet to the concerned workman and asks him whether he admits the charges or not. Even if he admits or he does not admit, even then we are to proceed and complete the procedural formalities as per some recent judgments of the Honorable Supreme Court and the High Court. Nextly, the management leads the evidence, that is, the first to open the inquiry is the management or the employer. After his evidence is over, many a times the management representative helps the concerned management witness to narrate his story, and he leads the evidence, which is nothing but the examination in chief. After his examination in chief is over, the workman or his representative, that is the defense counsel, he will cross-examine the management witness. Thereafter, the another management witness begins his deposition, if any. After the conclusion of the management's evidence, then the worker begins and he is being cross-examined by the management representative. After this is over, then the proceedings are being over. Now this total version, that is the cross-examination and the examination in chief, is being jotted down either in writing or on a typewriter by the inquiry officer, on which signatures of all present are obtained. One word of caution: before everything proceeds, we have also to see whether the quorum is fulfilled, and the quorum will consist of the inquiry officer, at least he has to be present for the inquiry, the concerned workman, he also has to be present, and then the remainder of them, that is the management's witnesses as well as the representative. No inquiry can proceed in the absence of the inquiry officer as well as the concerned workman. Now, we have understood the basics of an inquiry. But friends, seeing is believing. So, let's see how actual inquiry is conducted. तो दोस्तों, यहाँ सब मिल चुके हैं, तो थोड़ी ही देर में हम अपना कार्य आरंभ करें। मुझे विश्वास है कि जो जल्दी शुरुआत करता है वह जल्दी मंजिल तक पहुँच जाता है। अगर आप हाँ कहे तो जो इंक्वायरी मैं फेस कर रहा हूँ उसके बारे में मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो रमेश, तुम बिना झिझक से किसी से भी कुछ भी सवाल कर सकते हो, और चाहो तो इंक्वायरी ऑफिसर दीक्षित साहब की भी सहायता ले सकते हो। देखो, ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, कानूनी कार्रवाई नहीं, इसलिए कोर्ट में जो स्ट्रिक्टनेस पाया जाता है वो यहाँ बिल्कुल नहीं है। इस कार्रवाई के बारे में मैंने मेरे भाई से बातचीत की, वो एडवोकेट है। उसने बताया कि ये सिविल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट ये कुछ यहाँ लागू नहीं है। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। देखो, नॉन वायलेंस के जो तत्व है, जो प्रणाली है, उसे फॉलो करना हमारा काम है। तुम निश्चिंत रहना रमेश, यहाँ तुम्हें सुनने का पूरा मौका दिया जाएगा और व्यवस्थापन की ओर से ये तो अंतिम फैसला सुनाएगी नहीं। क्या तुम्हारे भाई ने तुम्हें ये बताया नहीं कि ये आभासी कानूनी कार्रवाई है? ये कानूनी तथा तांत्रिक शब्दों से मैं बहुत घबरा जाता हूँ। ठीक है मित्रों, मेरे पास सब कागजात मौजूद है, तो कार्रवाई की शुरुआत की जाए। तो रमेश, तुम पर चार्जशीट लगवाई गई है। इतना बताओ कि क्या तुम्हें चार्जशीट के बारे में सब कुछ जानकारी है? हाँ, इतना ही नहीं, मैंने इसके संदर्भ में जवाब भी दिए। हाँ, वो भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, तो तुम्हें इस इंक्वायरी के स्थान और वक्त के बारे में कोई कठिनाई तो पेश नहीं आई? जी नहीं। देखो रमेश, शांति से काम लो। तुम्हें तो ये इंक्वायरी की सारी जानकारी हमने दे दी है।
और भी कुछ आप तुम पूछना चाहे, तुम्हें कुछ आशंका हो तो कृपया मुझसे पूछ ले। क्यों डिकोस्टर जी। देखो, ये सब शुरुआत करने के पहले मैं तुमसे एक सवाल करूं, क्या तुम्हें सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल गई? जी हाँ, अभी तक की? अभी तक के सब मिल गए। अच्छा, तो क्यों ना हम ये काम शुरू करें। देखो रमेश, चार्जशीट में बताए गए चार्जेस के मुताबिक इन इंक्वायरी का गठन किया गया है, जिस पर तुम पहले अपना जवाब दे चुके हो। फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये चार्जेस तुम्हें मंजूर है, तुम इसको स्वीकार करते हो? इसमें से कोई भी चार्ज मुझे कबूल नहीं है। इन चार्जेस का मतलब जानते हो? हाँ, मुझ पर 2 चार्जेस लगाए गए हैं, एक कंपनी की प्रॉपर्टी चुराना और दूसरे स्टैंडिंग ऑर्डर के नियम तोड़ना। देखो रमेश, व्यवस्थापन को अभी इंक्वायरी शुरू करनी पड़ेगी। इस संदर्भ में हर बात की तुम्हें पूर्णतः जानकारी है। अगर कोई आशंका हो तो कृपया मुझे पूछ लेना। देशपांडे। हाँ सर, व्यवस्थापन की ओर से सबसे पहले गवाह है वॉचमैन तुकाराम। हाँ तुकाराम, तुम रमेश के बारे में जो भी जानते हो वो सब ईओ साहब को बतला दो। देखो साहब, उस दिन 13 जून के दिन शनिचर था और ठीक 4:15 बजे मैं अपने कंपनी के गेट पे काम कर रहा था, जो कि वर्कर की जांच करने का। तो उस वक्त मैंने रमेश की भी जांच की, तो मैंने पाया कि उसके पास 3 कॉपर रॉड मुझे मिले। उस पर अपने कंपनी के मोहर भी लगाए थे। तो मैंने दूसरे वॉचमैन को बुलाया और अपने रमेश को मैनेजमेंट के पास हवाले कर दिया। रमेश, तुमने तुकाराम का बयान अभी अभी सुना, क्या इसके विरोध में तुम अपना बचाव करना चाहोगे? जी हाँ, जरूर। दरअसल सच्चाई कुछ और ही है। तुकाराम, तुमने रमेश की जांच किस वक्त की? दोपहर 4:15 बजे कंपनी के मेन गेट पे। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि वो रमेश ही था जिसकी तुमने तलाशी ली? हाँ, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि वो रमेश ही था। तुमने अभी अभी कहा कि तुमने दूसरे वॉचमैन को बुलाया था। हाँ। क्या नाम था उसका? उसका नाम था तिवारी। तिवारी? अपना एसएस तिवारी? हाँ, एसएस तिवारी। हाँ? पक्का? पक्का। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, यकीन के साथ कहता हूँ वो एसएस तिवारी था। तो करा, ये देखो, 13 जून को तिवारी, एसएस तिवारी काम पे था ही नहीं, वो छुट्टी पे था। ये रहा उसका छुट्टी का आवेदन पत्र, ये लीजिए साहब। अच्छा, अभी इसके बारे में तुम क्या कहोगे? मुझे लगता है शायद वो कोई दूसरा वॉचमैन था। लेकिन तुमने तो अभी अभी कहा कि तुम्हें पूरा यकीन है। खैर छोड़ो, अब तो करम ये बताओ कि तुमने रमेश की पूर्णतः जांच की थी? हाँ, दोपहर 4:15 बजे मेन गेट पे मैंने जांच की थी। तो करम, रमेश को फोरमैन साहब ने दोपहर को 4:15 बजे ये अर्जेंट प्रोडक्शन शीट दिया था। ये देखो, इस पर फोरमैन साहब के दस्तखत है और टाइपिंग भी है। तुकाराम, दोपहर को 4:15 बजे, ये लीजिए साहब। क्या 13 जून को? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि रमेश उस समय शॉप फ्लोर पे था, मेन गेट पे था ही नहीं। तुकाराम से आप कुछ और सवाल करने हैं मिस्टर डिकोस्टर? यू आर यूनियन लीडर। जी नहीं, मेरे ख्याल से इतना काफी है। ठीक है दोस्तों, तो आप कृपया इस डिपोजिशन शीट पर हस्ताक्षर करें। और हाँ, अब तो लंच का वक्त हो गया है। मेरे ख्याल से कार्यवाही लंच के बाद में ही शुरू कर दें। डिकास्टर साहब। हाँ बोलो। आप क्या होगा? देखो, मैनेजमेंट ने उसका पहला गवाह पेश किया, जिसे हमने कुछ सवाल किए। थोड़ी देर के बाद मैनेजमेंट दूसरा गवाह पेश करेगी, हम उससे भी सवाल करेंगे। इसका मतलब इंक्वायरी पूरी हो गई? अरे नहीं नहीं, इसके बाद में हम अपना गवाह पेश करेंगे, जिसे देशपांडे साहब सवाल करेंगे। और इसके बाद में हम इस केस के बारे में जो भी आरोप है उसका पूरा खंडन करेंगे लिखित स्वरूप में। इसके बाद में क्या होगा, ईओ दीक्षित साहब उसके ऊपर गौर करेंगे और अपना निर्णय मैनेजमेंट को दे देंगे। फिर या तो उसके मुताबिक तुम या तो गुनहगार साबित होंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, इस मुसीबत से हम आसानी से निकल आएंगे। चलो। In the clipping, the enquiry officer was writing down some statements. Are these statements are required to be taken down in the presence of worker? As regards
the statements and the signing on it, it is very, very important that everybody who is present, I mentioned about the quorum, everybody who is present in the quorum must sign on the statements which are being recorded before the inquiry officer. It is an absolute must, and we have also to ensure that the workman has signed that, because if tomorrow the inquiry report goes before the tribunal or the courts and the workman takes up a stance that he was absent in the inquiry, the question is, how are you to prove his presence? He will say that yes, there was an inquiry officer and the management witnesses, they all sat down in the manager's cabin and wrote up all this sort of a questionnaire and they have concocted a total evidence against me. How are you to prove in the negative? So it's in the fitness of things that what you do is, on each and every paper, you ensure that the workman as well as the concerned people who are present in the inquiry have signed. Another thing is to be remembered that the inquiry officer is not a judge. He is like a judge because the inquiry is a quasi-judicial or a like judicial proceeding. He does not have a power to summon anybody, which is a power which is expressly conferred by the statute. This sort of a power is absent. And as regards production of documents and production of witnesses, a simple principle is to be borne in mind that each side has to produce his own document and each side has to produce his own witness. The inquiry officer cannot compel either the witness as well as the production of the documents, but yes, he can draw an